And you can let me know if the slide is audible to you. The slide is visible and the voice is audible or not, right? Yes, sir. Slide is audible. Shalom, very good, very good. Okay, so we are good to start now. So we can have just a little bit of introduction before we actually practice questions related to vitamins, right? And as I already told you, जो vitamins है ना, it has come from two words. Okay, कोई किसी को याद है मैंने पिछले क्लास में बोला था कि जो विटामिन है इसके मतलब दो bifurcations हैं. It can be split into two parts. Okay, what is that? You can respond in the chat section. Anyone? Okay, so why it has been named as vitamins? No, vitamins nahi. Vital amino acids. Very good. है ना? Vitamin has come from vital. रुको. Meeting group review. Not Agnivesh. It has come from vital amine, that is vital amino acids. पहले ऐसा माना जाता था कि जो विटामिन है ना उसमें एमिनो एसिड्स प्राइमरली होते हैं, जो कि कई हद तक सही भी है, बट बाद में there were many vitamins which were not having amines but still they were vitamins. Okay, so vital मतलब which is very necessary for our survival. Okay, the word vital has that reference. It is very necessary, very important, crucial for our survival. Okay, so and you know ये जो चीजें होती है vitamins की, these are organic compounds which are required in small quantities but on regular basis, है ना? ये बहुत important चीज है. I'm writing in the chat section also. Okay, small quantity but on regular basis, है ना? आप इसमें gap नहीं कर सकते. You have to keep supplying this, right? Small quantity but in regular basis. You have to supply this vital amines. Okay, so that thing is very, very important to remember. And there are so many vitamins. You already know we have vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B12, B5, B7. Then vitamin C is there, vitamin B6 is there, D is there, E is there, K is there. Okay, so these all are vital for our like survival, right? Now, if you have a look here, you will see that vitamins can be broadly classified into two categories in general. Okay, first is vitamin, water soluble vitamin, and second is fat soluble vitamin, right? So water soluble vitamins are the vitamins which has to be supplied to the body regularly. Okay, regularly because they get excreted because of the urination, है ना? विटामिन बी और विटामिन सी इसके एग्जांपल है जिनको हमें बाहर से सप्लाई करना पड़ता है ना? क्योंकि ये ना क्या होते हैं, excrete हो जाते हैं बॉडी के थ्रू, because they are what since they are water soluble so they can easily be excreted, right? So ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, right? So आप देख सकते हो यहाँ पे that vitamin B, okay, and vitamin C, right? These are water soluble. Basically आप याद रख सकते हो पंजाबी का ये ट्रिक केड़ा. Okay, the trick is केड़ा. So ये क्या है, oil soluble vitamins है ना? तो अगर ये oil soluble है ना, if this is oil soluble, so this is water soluble, right? So आप लोग just chat section में केड़ा लिख सकता है. केड़ा is oil soluble. Okay, केड़ा is oil soluble. So इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हो, क्योंकि कई बार ना वो क्वेश्चंस को घुमा के इधर उधर करके अल्टीमेटली यही जानने की कोशिश करता है कि आपको इसका डिफरेंस पता है कि नहीं है कि ऑयल सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल क्या है. Okay, so difference between these two has to be very, very clear before we proceed ahead, right? So I think we are clear on this part that vitamins can be of two types. We can have water soluble vitamins and we can have fat soluble vitamins. Okay, water soluble, since they are soluble in water, they get excreted very easily through urination, and that's why these are okay. And then vitamin B में कितनी categories आती हैं? We have vitamin B1, B2, B5, B7, B3. Okay, we have B9 which is folic acid. We have B12 that is cobalamin. We have B6 and we have vitamin C which is citrus in nature. Okay, ascorbic acid. So I think that thing is very, very clear. Keda is oil soluble. This trick also should
गो राइट इन योर ब्रेन, है ना, एटलीस्ट फॉर दिस अटेम्प्ट। ठीक है, बाकी क्या है, विटामिन ए होता है जिसका देखो अब सबको याद करने का तरीका भी अच्छा है ना। अब जैसे देखो, इसको याद करने का तो इनके केमिकल फॉर्मूले भी होते हैं, जितने भी विटामिन हैं उनके क्या केमिकल फॉर्मूले भी होते हैं। अब जैसे विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए का ट्रिक बहुत आसान है। विटामिन ए में क्या होता है, विटामिन ए क्या है, हमारी आंखों के लिए अच्छा है। विटामिन ए इज गुड फॉर आवर लाइक आईज, है ना। तो बहुत अच्छा तरीका है इसको याद करने का, मुझे पता नहीं कि आपको डिफिकल्टी होगी नहीं। देखो आंख जो होती है ना वो भी ऐसे चालू होती है, आंख, है ना। और आंख में क्या होता है, रेटिना होता है, यू ऑल नो रेटिना। तो इसका फॉर्मूला हो गया रेटिना। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर। इससे ज्यादा इजी तो नहीं हो सकता। देखो, ट्राई लर्निंग दिस वे, है ना। ऐसे प्रॉपरली आप सिस्टमैटिकली पढ़ने की कोशिश करोगे सो यू विल हैव नो डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग। हमको रिमेम्बरिंग में या मेमोराइजेशन में डिफिकल्टी इसीलिए होती है क्योंकि हम उनको कॉम्प्लेक्स ही रहने देते हैं, राइट। इफ यू मेक एफर्ट्स तो आप भी ऐसे प्रॉपरली इसको समझ सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। आप सब लोग समझ में आ गया। विटामिन ए, है ना, ए मतलब आंख, आप याद रखना। तो उसमें आंखों में क्या होता है, रेटिना। तो विटामिन ए का फॉर्मूला क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया। ठीक है, तो दिस सबको समझ में आ गया आई थिंक। चलो, वेरी गुड। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन बच्चों, विटामिन डी, है ना। विटामिन डी इज गुड फॉर अवर बोन्स, एंड बोन्स में होता है कैल्शियम। सो यू कैन सी कैल्सीफेरोल जो है, कैल्सीफेरोल फॉर्मूला हो जाता है किसका, विटामिन डी का। ठीक है, दैट हैज टू बी रिमेम्बर वेरी वेरी प्रॉपरली। देन विटामिन सी का भी ट्रिक है। सी क्या है, सिट्रिक एसिड, जिसमें पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है ना। और उसमें खट्टा मतलब क्या, एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाएगा, है ना। तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, राइट। तो थोड़ा सा मतलब ऐसे आप एक एक चीज को ध्यान से रखोगे तो यू विल बी एबल टू रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट। तो ये आप देख सकते हो वेरियस विटामिन हेयर। विटामिन ए, इट हेल्प्स यू टू सी बेटर इन द डार्क एंड मॉइस्चराइजेस द स्किन, है ना। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इट इज द विटामिन ए हैज टू बेनिफिट्स, फर्स्ट योर आईज, सेकंड योर स्किन, है ना। आपकी आईज के लिए भी अच्छा है और आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, दैट इज, है ना। और इन दोनों की डिफिशियंसी होने से ही स्किन पे इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब अगर विटामिन ए की कमी होगी सो यू विल हैव नाइट ब्लाइंडनेस एंड यू विल हैव अ ड्राई स्किन। Vitamin B is good for your heart and lungs. Okay, so suppose if you have loss of appetite, if your heart disorder is there, or if you have joint swelling, these all will indicate that you have a deficiency of vitamin B. Now vitamin C तो आपको पता ही है, जब कोरोना हुआ था, C for corona, C for citric acid, C for vitamin C which contains ascorbic acid, है ना। तो जो विटामिन सी है, अगर आपके ना टीथ और गम को हेल्थी रखता है और कोल्ड को प्रिवेंट करता है। तभी तो हमने कोरोना में खूब सारी विटामिन सी की टैबलेट्स खाई थी, है ना। क्यों खाई थी, क्योंकि विटामिन सी जो है, नॉट ओनली इट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, ऑल्सो इट हेल्प्स अस फाइट कॉमन कोल्ड, है ना। उससे भी हमको प्रिवेंट करने में मदद करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिसीज होता है दैट इज नोन एज स्कर्वी, राइट। नाउ विटामिन डी, डी इज गुड फॉर आवर बोन हेल्थ, है ना। हमारी बोन हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी डेफिशिएंसी हमारी बोन में क्या है, वीकनेस आ जाती है, राइट। नाउ विटामिन ई ऑलरेडी नो, इट इज गुड फॉर आवर मसल मूवमेंट। और जो क्या बोलते हैं, विटामिन ई इट्स आल्सो गुड फॉर आवर हेयर आल्सो। ओके, जस्ट ओके। सो विटामिन डी, जितने भी विटामिन ई, जितने भी ऑयल होते हैं, राइट। ना कुछ और स्पेशल विटामिन भी है, जैसे विटामिन के, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, फाइलोक्विनोन, ठीक है ना। फिलोक्विनोन होता है, इट इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। एंड विटामिन के, इट हेल्प्स टू मेक प्रोटीन नीडेड फॉर ब्लड क्लोटिंग, है ना। अगर आपका ब्लड प्रॉपरली क्लोट नहीं हो रहा है देन देयर हैज टू बी सम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। और इसके जितने भी एडवांटेजेस हैं आप प्रॉपरली देख सकते हो, ठीक है ना। सो ब्लड क्लॉटिंग अगर प्रॉपरली नहीं हो रही है सो यू हैव टू ब्लेम द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के फॉर दिस, है ना। विटामिन के की कमी से ऐसा होता है, ठीक है। चलो, ओके। अब मैं ना जस्ट पोल को रेडी कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हो, वेरी बेसिक क्वेश्चन, जस्ट टू स्टार्ट विथ इट, ओके।
ऑल राइट, सो दिस वाज जस्ट अ स्टार्टर क्वेश्चन। मैं तो बस, अरे यार इसका चार्ट करना, इसका पोल करना था। ओके चलो मैं इसका पोल भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि हम में से कोई ना कोई महान ऐसा होगा जो सही आंसर के अलावा भी बाकी सब आंसर सेलेक्ट करेगा, है ना। ये लो, नाउ यू कैन स्टार्ट पोलिंग फॉर दिस। लेट अस सी, कुछ ना कुछ महान लोग मिलेंगे ही, आप देखना। ऑल ऑफ यू प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन ऑन पोल, है ना। लेट अस सी कि मतलब करेक्ट आंसर के अलावा बाकी कितने लोग गलत आंसर को करते हैं यहाँ पे। हरी, अब बस 7 ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक पोल नहीं किया है। ओके, दे स्टिल हैव अ चांस, दे कैन गो फॉर पोलिंग राइट नाउ। नाउ 6 स्टूडेंट्स लेफ्ट, जल्दी से पोलिंग करो। 4 स्टूडेंट्स लेफ्ट। कौन है वो 4 लोग जो बस म्यूट स्पेक्टेटर की तरह देख रहे हैं और प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, है ना। लगता है वो 4 लोग कभी नहीं जगेंगे अभी। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स आई सी only 36 have polled here. Okay, okay, 3 students left now. Chalo, let me display the result now. So here you see, 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब ऑप्शन डी क्लिक कर दिया है, बाकी दैट्स ऑल, है ना। देखा, होते ही हैं। कई लोग तो क्या होते हैं, को पता होता आंसर, फिर भी गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं, न जाने कौन से ख्यालों में खोए रहते हैं। बेटे ये टाइम नहीं है ख्यालों में खोने का। रियलिटी इज इन फ्रंट ऑफ यू, द ओनली डिफरेंस यू कैन मेक इज नाउ ओनली। ठीक है ना। बाद में कहानियां सुनाते रहना, वो मेरे को तो सारे क्वेश्चन आते थे, मैंने तो ऐसे गलती कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। नो वन इज इंटरेस्टेड इन योर स्टोरीज, ऑल दे वांट टू सी इज रिजल्ट, है ना। वही मैटर करेगा और कुछ भी नहीं करने वाला मैटर। ठीक है, चलो। So this is the answer is determined for this. Chalo. Now we can have the next question. Right? Sir, these questions are from CDS India or any CRPF, anything? This is taken from previous year only. Hurry up, everyone. इसमें भी I'm happy to see that more than 90% of you have selected the correct answer. Okay, so the correct answer for this question is vitamin K, है ना. So very good response, है ना. ऐसा ही response होना चाहिए. This response indicates that you are listening very attentively in today's class. Okay, now the next question. ये पूरे vitamins के ऊपर ही questions है आज की क्लास में. अब जिनको भी इसकी ट्रिक याद होगी ना, they won't have any issues in solving this question, है ना. तो प्रॉपर्ली समझाया था. चलो, और लकीली ऑप्शन भी ए है. हाँ, ए से आंख. ठीक है, चलो. ऐसी किस्मत भी हो जाती है. राइट, चलो हम लोग थोड़े फॉलो अप क्वेश्चंस भी लेंगे, है ना.
ताकि सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव रहे, बिकॉज कई लोग को क्या है आंसर पता होता है, वो तुरंत टिक कर देते हैं, एंड कई लोग क्या है लास्ट मोमेंट में टिक करते हैं, पूरे 1 मिनट का फायदा उठाते हैं, है ना। तो उन लोगों के लिए कुछ एज अ फिलर क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे, ओके, लाइक आई ऑलवेज डू इन माय सेशंस, राइट। सो यू कैन सी द रिजल्ट, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, relaunch the poll. All right, so again, vitamin D is the correct answer for this question, right? Now the next question. यहाँ पे आपको कीड़ा वाली ट्रिक काम आएगी। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज लग रहे हैं, है ना। मे बी चलो अभी और बहुत सारे कीड़ा पे क्वेश्चंस आएंगे, सो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, मे बी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन ट्राई लाइक डूइंग दिस करेक्ट। Aki, we can have follow-up questions also. I'll just ask you some bit. Okay, so the correct answer इसमें पूछा है which one of the following is not a water soluble, मतलब बेसिकली वो पूछ रहा है कि ऑयल सॉल्युबल इसमें से कौन सा है। तो ऑब्वियसली कीड़ा में इसमें विटामिन बी और सी होते हैं वाटर सॉल्युबल, और ये हो गया कीड़ा वाला, सो ए ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, है ना। आई होप जिनको ये ट्रिक पता होगी उन्होंने, आई थिंक दे लाइक दे वुडंट हैव टेकन मोर देन 5 seconds टू आंसर दिस, लाइक दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड क्लोटिंग। Okay. Now in the chat section, you can like give an example of a species which is a saprophyte and a species which is a parasite, है ना। और दोनों का आप डिफरेंस भी समझा सकते हो in the chat section, है ना। What is the difference between a saprophyte and a parasite? Right, very thin line distance is there, right, and you can give example also of saprophytes and parasites. And the correct answer of this question is option D, right? Very obvious question.
Okay, so one answer has come from Pranav, that is parasites survive through host. थोड़ी और clarity की जरूरत है इसमें, है ना, between saprophytes and parasites. Okay, let me make this clear. जो saprophytes होते हैं ना, they feed on the dead and decaying matter, okay, which can include bacteria and fungi. They digest the food externally before the nutrients are absorbed. Whereas if you take the case of parasites, okay, so they obtain nutrients from living organisms, and they feed on living organisms. They are parasites. For example, fleas, lice, and tapeworms. Right? Now, can you tell me, जो जो फंगी होता है वो उसका कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है? ओके, which mode of nutrition is found in fungi? And the answer of question number 7 was, you can say vitamin C. ठीक है ना, विटामिन सी है इसका आंसर. ओके, वेरी गुड. ये भी आप लोग ने आंसर दे दिया. सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है किसमें? फंगी में. ठीक है. ओके, मशरूम का साइंटिफिक नेम कौन लिख सकता है यहाँ पे? मशरूम का, ठीक है ना, दैट यू कैन राइट. मीनवाइल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. And another question regarding diseases you can answer, कि which continent has highest number of death from malaria, है ना, मलेरिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेथ किस में होते हैं? ओके, वेरी गुड. सबने आंसर दे ही दिया. मशरूम का, Agaricus bisporus, that is the correct answer. Okay. Okay, so the correct answer of this question is vitamin E, है ना. अगेन इधर केड़ा वाला ट्रिक आपको यूज करना था और उससे आपको आंसर पता लग जाता. Okay, now you can tell me, yeah, let's go to the next question first. This is the question number 9 here. I'm ending the poll, relaunching it so that you can attend this one. अच्छा, कॉन्टिनेंट का नाम तो आपने दिया ही नहीं जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आते हैं मलेरिया के, डेथ के, तो क्वेश्चन ही स्किप हो गया. कॉन्टिनेंट पूछा है इधर, तो नाइजीरिया आंसर दे रहे हैं. Anjali, the question is, out of all the continents we have, which continent reports maximum number of death from malaria? Yes, Anjali said it's Africa, है ना, particularly sub-Saharan Africa जो होता है ना, there you get maximum number of malaria like casualties. ठीक है. Now, alligator is warm-blooded or cold-blooded? That you can answer. So the correct answer of this question is vitamin E. Now we go to the next question here. Very good. Alligator का आंसर लगभग सही, सभी लोग सही दे रहे हैं. Okay, so you know, organisms like fish, alligator, frog, lizard, snakes, crocodile,
they all are cold-blooded. Okay, whereas we humans, dogs, cats, whale, elephants, they all are warm-blooded. ठीक है? Let's move on to the answer of this question. The answer of this question is option C, that is vitamin C, जिसमें swollen और bleeding gums के symptom देखने को मिलते हैं. Right? Now next question. Again कीड़ा का trick लगेगा इस. Question number 11. जल्दी इसका आंसर तो अब तो धड़ाधड़ करो, इसका आंसर वेट मत करो. Okay, so the correct answer is obviously option A, which you can see. Let me share the result with you. 86% of the students have done it correct. That is 25 out of 29 have got it correct. ठीक है ना? मतलब अभी भी 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको खेड़ा वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, है ना? Maybe you will get another opportunity. इसके बाद तो भैया कुछ नहीं हो सकता. Because this is the third question on खेड़ा. Obviously twist and turn करके दिया गया है, but anyway you can always try to find कितना important है इसका logic. ठीक है? Now next question. Again, this is very important question. Okay. अब इसमें मैंने already I have spoken enough. I just want the answers. And in general questions of bio, this question has been like asked many times. Which gland is exocrine and endocrine both? है ना? ऐसी कौन सी gland है जो which is exocrine gland also and endocrine gland also? है ना? Because you know that there are two type of glands which are found, right? Like glands can be classified as exocrine or endocrine. It depends upon absence or the presence of ducts. ठीक है? Exocrine glands जो होते हैं they release their, okay, जरा इसका आंसर देखो किसी ने दिया क्या अभी तक? Okay, Kripa has become the first one. Then Rahul, Anjali, pancreas है ना? Pancreas एक ऐसे gland होते हैं which is exocrine and endocrine both. ठीक है? Exocrine का मतलब क्या है? These are the glands which release their secretory products into a duct and which then opens into a specific part of the body. It can be skin, stomach, respiratory tract, anything. Okay, and examples of exocrine glands are, can you give some examples of exocrine glands there? Yes, exocrine glands example. Vitamin B12 was the correct answer. Yeah, अकेला एक ऐसा विटामिन है जिसमें मेटल पाया जाता है and that particular metal is B12, sorry, cobalt. Okay, sweat gland, hypothalamus, salivary, है ना? ये सारे examples है किसके? Exocrine glands के. Now endocrine glands, they release their products. Okay, they release their secretory products, or you can call them hormones, into the blood vessels. ठीक है? From where they can travel to the various parts of the body. This includes pituitary gland, thyroid gland and adrenal gland. ठीक है? चलो
Now the next question. And one more question has come many times, and I think you must be knowing the answer of this. You have to name the master gland, and you can also give the reason that why that gland is known as master gland at all. And that gland is actually it has a size of a pea. That's it. है ना? P की size का pituitary gland होता है. Okay. So Dipto has got it correct. Sanchit also has got it correct. Right? चलो इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग सही देते हैं 13th वाला ये भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है. Okay. So I'm just ending the poll now because you have been given enough time. Right? सब लोग confused थे. The correct answer for this is folic acid. ठीक है ना? Can you tell me in which vitamin folic acid is found? आपको जब मैं चार्ट शो कर रहा था, you must have seen folic acid. So you have to name the vitamin. Very good. Akhil, Kripa, okay. Vitamin B9. Uday also has answered it correctly. The vitamin B9 में folic acid पाया जाता है. ठीक है ना? And this is the most essential nutrients for a woman during her initial stages of pregnancy to prevent birth defects. ठीक है? Chalo, let's move on to the next question now. We're launching the poll. So pituitary gland, it has the size of P, है ना? And it is the without it the body will not produce or grow properly, right? This hormone, this gland, controls many other hormone glands in the body, right? Like you can find जो adrenal gland है, जो growth hormones है, जो TSH है, thyroid stimulating hormone है, LH है, FSH है, prolactin है, सब इसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. ठीक है? चलो. Now the answer of this question, it is because of vitamin A deficiency, right? Chalo. Then we have got the next question here. Which deficiency vitamin and which the deficiency of which vitamin causes the disease beriberi? And yeah, one more question you can answer. What is the chest cavity called? Human body का जो chest cavity होता है, what is that called? Okay, so that you can write in the chat section. Again, it's open now, right? And this chest cavity is the second largest hollow space of the body. Okay, it is enclosed by ribs, the vertebral column, sternum, and breastbone. Very good. इसका सबसे पहले आंसर किया है राहुल शर्मा. ओके, फॉलोड बाय धनंजय, प्रणव, फिर राहुल एक और है 586 वाला, then निखिल, उदिप्तो दास. Okay, so all these things are very important now. Open that. So vitamin B1 causes beriberi disease, right? Now the next question. Read all the statement properly.
ओके, अभी जैसे हमने बात किया कि जो थोरैकिक कैविटी है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट, तो हाईएस्ट कैविटी कहाँ पाई जाती है ना? सबसे बड़ा जो वैक्यूम जो अपनी बॉडी में कहाँ पाया जाता है? बिकॉज दिस thoracic was the second in number, second most like spacious hollow space. नो, ब्रेन थोड़ी है। और कोई गेस करो। वेरी गुड, एब्डोमेन वाला आंसर सही है इसमें। टूथ कैविटी, भैया मैं सबसे बड़ा पूछ रहा हूँ और आप छोटे से छोटा सोच रहे हो। हम्म, चलो, कई कैविटी होती है ना? ब्रेन में होती है क्रेनियल कैविटी, चेस्ट में होती है थोरैकिक कैविटी, है ना? स्पाइन में भी स्पाइनल कैविटी होती है ना? देन पेल्विक कैविटी इज देयर, एब्डोमिनल कैविटी इज देयर। ओके, ब्रेन लिख दिया तुम लोगों ने। ब्रेन में भैया 75% तो पानी होता है। ओके, ब्रेन कंटेन्स 75% वाटर। इससे पता है एक चीज ये सीखने को मिलती है कि अगर हमारा ब्रेन जो है, इफ इट इज मेड अप ऑफ 75% वाटर, है ना, दैट मीन्स डिहाइड्रेशन कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट, है ना? इससे आप समझ सकते हो कि डिहाइड्रेशन से कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि आधा जो 75% ब्रेन हमारा पानी से है ना? तो अगर स्मॉल क्वांटिटीज में पानी का है ना, इट कैन हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन। ओके, और दुनिया में सबसे बड़ा दिमाग होता है स्पर्म वेल का। ओके, ह्यूमन ब्रेन जो है, इट ग्रोस 3 टाइम्स इन साइज, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ही 3 टाइम्स इन साइज, और सिर्फ 18 साल तक ही बड़ा होता है ब्रेन, है ना? उसके बाद वो रुक जाता है, राइट? एंड again this is also very interesting to know that the brain of human, it contains approximately 1,000 crore neurons. okay, and अकेला ब्रेन जो है 20% ऑक्सीजन ले लेता है ना? हम हमारे 20% ऑक्सीजन, 20% ब्लड ले लेता है, ठीक है? और ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जिससे 20 वॉट के बल्ब को आप जला सको, ठीक है? And I don't know whether this fact will help you or not. Men's brain are 10% bigger than women's. This is also there. Okay. And your eyeballs, okay, your eyeballs are an extension of your brain and are directly connected to it. Okay. That's okay. And the brain, it is divided into many lobes: frontal lobe, temporal lobe, then we have occipital lobe, and a peripheral, parietal lobe, right? So these all are fats. Okay, what a great machine, संचित ने कहा। ओके, और हम दिल के पीछे पड़े रहते हैं। चलो, तो इस स्टेटमेंट और सारे क्वेश्चन 16 के सारे स्टेटमेंट आप पढ़ते, तो जो ऑप्शन सी है, दैट वाज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ ओके, लेट दिस बी द लास्ट क्वेश्चन। ओके, आप इसका लास्ट चांस भी है ना? एंड या लेट मी सी हाउ मेनी आर एबल टू जॉइन दिस। ओके, ओके, कौन कौन भैया? वेटिंग रूम में तो कोई नहीं है। And tomorrow we will be having this session on plant kingdom, है ना? कल जो है प्लांट किंगडम के ऊपर फोकस रहेगा, so we will have questions on plant kingdom too, right? Take care of that also. Come prepared so that you can answer most of the questions here, है ना, without googling. ठीक है? That is your honesty. ठीक है? आपको इतना तो पता होना चाहिए कि एग्जाम में तो गूगल आपके पास रहेगा नहीं, है ना? तो होते हुए भी उसको इग्नोर मारना सीखो, right? I know that is a limitation, like you can use Google and answer, but again your honesty is at check then. ठीक है? Okay, so here
Right. So the correct answer, है ना? Correct answer. I'll just reveal the correct answer to you shortly. Sir, are you I there? don't know. Yeah, yeah. This is the answer. Black currants. Okay. So ये ऐसा टाइप का थोड़ा जामुन की तरह ही दिखता है ये, है ना? This has got highest like level of vitamin C. Right? It has the highest level of vitamin C. Right. So tomorrow we will be having questions on plant kingdom. So come prepared accordingly. And these all were the questions. And obviously you will get the. I think you are getting the recorded lectures and PDF in the app. Okay. So jitne bhi classes ho rahi, you can very well recap whatever we have done. Okay. In case you have missed any classes. So all the classes have been arranged in series to help you again. Okay. बट अगेन क्या है कि मेहनत आपको ही करनी है, एग्जाम आपको ही देना है, और ऑब्वियसली बात है, वंस यू मेक इट, वंस यू क्रैक इट, देन द प्लेजर इज ऑल योर्स ओनली. ओके, ऑब्वियसली वी विल बी हैप्पी, बट आपसे ज्यादा तो हैप्पी नहीं हो पाएंगे ना. सो दैट इज देयर. सो इट्स लाइक यू ओनली डिसाइड व्हाट हैज इज द बेस्ट फॉर यू. ऑलराइट, सो टिल नाउ एवरीवन, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, जय हिंद.